Hello everyone. This is last session of Flywheel, right? So we have completed gear turn differential, traction theory and mechanics of chassis, and this is third topic, Flywheel. मेन पॉइंट इसमें आपको ये है कि प्रैक्टिस करने के लिए सफिशिएंट टाइमिंग मिलेगा, राइट? बिकॉज you all have joined from the start of this batch. इसी मंथ में 2 तारीख को स्टार्ट किया, राइट? तो आपको प्रैक्टिस का जो है ना प्रॉपर टाइमिंग मिल रहा है. डिफिकल्ट सब्जेक्ट है फार्म पावर एंड मशीनरी. स्टार्टिंग में हम लोगों ने इसे स्टार्ट कर दिया, तो ये आपका स्ट्रांग हो जाएगा. तो गाइस, दिस इज सेशन नंबर 3 and last of Flywheel, and in this session we are going to complete Flywheel gate previous year problems, right? Question number 1. The crank radius and connecting rod length of IC engine are 250 mm and 1000 mm respectively. If the crank turns 100 degree from the head dead center and the net force acting on the piston along its direction of motion is 35 kilonewton, the turning moment of the crankshaft at that instant in kilonewton meter is, right? So we have to calculate turning moment of the crankshaft. So first we write formula of turning moment. Crank effort Fr into crank radius. Crank effort Fr. Force perpendicular to crank, which is actually rotating the crank, right? So this is vertical IC engine. This is head dead center or inner dead center in horizontal IC engine. Head dead center or top dead center position of the crank in case of vertical engine, and inner dead center position of the crank in case of horizontal engine. This is bottom dead center or outer dead center. Bottom dead center in this configuration where engine is vertical, and outer dead center in case of horizontal IC. So crank is making 100 degree from the head dead center. So this is the position of the crank at which we are going to calculate turning moment of the shaft. It is making angle 100 degree from the head dead center position of the crank. So this is connecting rod at this time, and piston is reciprocating along this line. So this is the line of motion of the piston. Net force acting on the piston along line of motion is 35. So here F is 35 kilonewton, right? Suppose this angle is beta and this is theta. It is 100 degree
So this will be 180 minus theta plus beta. This total angle is 180. And guys, this is perpendicular to crank it. So this is 90 degree. So 180 minus this will get this angle. 180 minus 90 minus this angle, and it is 180 minus theta plus. So it is coming. So we have calculated this angle. Because F is given, so from this F we can calculate force along connecting rod FC. FC cos beta is equal to F. So FC is equal to F upon cos beta. Right. So we need this angle beta. From sine rule, we can calculate this because R is given. This is length of the connecting rod. It is also given. So from sine rule, we can calculate the value of beta at this configuration of this mechanism. मतलब कि जब क्रैंक 100 डिग्री फॉर्म कर रहा हो हेड डेड सेंटर से, दिस इज अ पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस mechanism. At this instant we can calculate beta by using sine rule. L upon sine of its opposite angle. So this is length of the connecting rod, L. So L upon sine of theta. R upon sine of beta. L, R, both are given. Theta is also given. So we can calculate beta. Beta is coming this. After getting beta, we can calculate FC. So FC is force along connecting rod. Its component is FR. So FR is equal to crank effort is equal to FC cos of this angle, cos of minus this. So cos minus theta and cos theta both are same. Cos minus theta and cos theta both are same. So this minus will be removed. So cos 90 degree minus theta plus beta, sin theta plus beta, right? FC sin theta plus beta. This is your crank effort. Right, already we have calculated FC, theta is known, we have calculated beta. So this is crank effort into crank radius. This is turning at this instant. Theta beta are varying, so turning moment is also varying. Already we have seen in previous live session. So we have a turning moment diagram which is periodic in nature. It is varying, right? A flywheel and clutch assembly weighs 200 Newton and has a radius of gyration 150 mm. Flywheel is the part of clutch. In clutch, flywheel is single plate clutch, either effective on single side or on both sides. Flywheel acts as one plate. When clutch is fully engaged, it means plate of clutch and flywheel both are in firm contact and they are behaving like a single unit
and it is rotating with the same speed. So that in this problem, mass of the flywheel and clutch, right, is the weight of flywheel and clutch assembly is 200 न्यूटन. एक साथ गिवन होने का यही रीजन है. Radius of gyration is also given. If the engine speed is 3000 rpm, the kinetic energy possessed by the rotating assembly in kilojoule is. This is a very simple problem. Kinetic energy half I omega square and I moment of inertia of rotating parts, flywheel and clutch assembly. mk square. Weight of rotating system is given. Divide this by 9.81 to calculate its mass. So I is equal to mk square. M is this. K is given. I is this. Right. RPM is given. That is the angular speed in RPM is given. We need this speed in radian per second. So omega is equal to 2 pi n upon 60, where n is in RPM. Comes value in radian per second. Put its value here to get the kinetic energy of rotating assembly. Question number 3. A thresher requires a torque of 5000 plus 500 sin alpha Newton meter to drive, where alpha is the angle of rotation of shaft measured from certain datum. The thresher is directly coupled to engine, which produces the torque of engine always produces variable torque, right? Because we have only one power stroke in 4-stroke IC engine, single cylinder 4-stroke IC engine, in which we are getting torque greater than mean torque required or torque required. एक ही स्ट्रोक है पावर स्ट्रोक, रिमेनिंग सक्शन, compression and exhaust. They need power, they need torque of varying amount. So in a single cylinder IC engine, torque produced by engine is variable. So torque produced by engine is always variable. No problem. It is given here. 5000 plus 600 sin alpha. Its mean is constant part. If you calculate the mean of this varying torque developed by engine, you will get its constant part 5000. Very simple. How to calculate mean? T mean, integration of t with respect to alpha in its cycle. साइकिल क्या हो जाएगा इसका? पाई 0 to pi d alpha 0 to pi. So after this calculation you will get 5000 Newton. This is the mean of engine torque, right? This engine is actually driving thresher which requires this torque. Again, if you find its mean, it is giving the same value 5000. So mean of engine torque and mean of thresher coupled to this engine, both are same, and this is necessary, right? ऐसा सेम होना चाहिए. नहीं सेम होगा, इंजन कुछ और प्रोड्यूस कर रहा है, रिक्वायरमेंट कुछ और है. इंजन स्पीड या तो बढ़ेगी या घटेगी, राइट? देन जो है ना गवर्नर वहां पर रोल प्ले करेगा उसको बैलेंस करने.
फ्यूल सप्लाई को चेंज करके टॉर्क को रिक्वायरमेंट पर सेट करेगा, तो ऑटोमेटिक वो एडजस्ट होके फिर से वही स्टोरी आएगी कि मीन टॉर्क डेवलप बाय इंजन मस्ट बी इक्वल टू external torque. If external torque is varying, in this case external torque is varying, that is the torque requirement by pressure is varying, so its mean is also equal to the mean of engine torque. ये दोनों हमेशा इक्वल होगा, नहीं होगा अनस्टेबल कंडीशन होगा, गवर्नर अकॉर्डिंगली फ्यूल सप्लाई देकर इन दोनों को इक्वल करेगा, तो ऑलरेडी इस प्रॉब्लम में इक्वल करके दिया. द फ्लाईव्हील एंड द रोटरी parts attached to the engine have a mass of 500 kg at a radius of gyration 0.4 मीटर. फ्लाईव्हील और उसके साथ जो रोटरी पार्ट्स है ये एक्चुअली क्लच वगैरह की बात करते हैं. द मैक्सिमम एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लाईव्हील इन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर विल बी मैक्सिमम एंगुलर एक्सेलरेशन. डियर फ्रेंड्स, फ्लाईव्हील एक्सिलरेट क्यों करेगा? व्हेन इट रिसीव्स एक्सेस टॉर्क और डिफिशिएंट टॉर्क, या तो एक्स्ट्रा टॉर्क रिसीव करे या लेस करे, उसी केस में जो है ना इसकी स्पीड चेंज होगी देन रिक्वायरमेंट से एक्स्ट्रा जब रिसीव करेगा तो स्पीड इंक्रीज होगी, इट मींस फ्लाईव्हील विल शो इट्स एक्सीलरेशन. रिक्वायरमेंट से लेस इंजन के द्वारा डेवलप किया जाएगा और फ्लाईव्हील को मिलेगा तो स्पीड डिक्रीज करेगी, एक्सीलरेशन हो. हियर acceleration is required, maximum acceleration is required. This is coming only due to excess torque available on the crankshaft. Flywheel is fitted with the crankshaft. Finally, flywheel. So guys, we need T engine minus T pressure. This is delta T excess. Clear? Differentiate this with respect to alpha, equate it to 0, find the value of alpha where this excess torque is maximum, right? After getting that alpha, putting the value of alpha in this difference, equate it to I alpha, and find I, mk square. M is given, k is given. We get alpha. It's a very so this is torque required by thresher. This is torque developed by engine. This engine is coupled with thresher. Mass of flywheel and rotating parts combinedly it is 500 kg. Radius of gyration this. Moment of inertia of flywheel with its rotating parts, it is coming this. Delta T axis I alpha. For maximum angular acceleration of the flywheel, this would be maximum. Delta T axis max. Delta T axis is variable. So first we find the value of independent variable. Here it is alpha, where delta T axis is maximum. So delta T axis must be differentiated with respect to alpha, equated to 0 to get the value of alpha. Right? So delta T axis को जो है ना हमने differentiate किया अल्फा के रेस्पेक्ट में, 0 से equate किया, and guys we are getting two values of alpha. दोनों को पुट करके देखो स्टोरी पता चल जाएगा. Delta T axis torque at this value it is coming this, and axis torque at this value it is coming this. Right? So here delta T axis मैक्सिमम आपको इस पर मिल रहा है और मिनिमम जो है ना निगेटिव इस पर मिल रहा है. We have to calculate maximum acceleration of the flywheel. So delta T axis maximum is this. So this is equated to I alpha max
I mk square alpha max. The torque exerted on the crankshaft of two-stroke engine is given by the equation 450 plus 30 sin 2 theta minus 90 cos 2 theta, where theta is the crank angle displacement from the inner dead center. This is horizontal. Two-stroke engine. So in horizontal two-stroke engine, two important extreme position of the crank, inner dead center and outer dead center. Corresponding extreme positions in a vertical engine, head dead center and bottom dead center. Top dead center, bottom dead center. If the resisting torque is constant, here resisting torque acting on engine is constant. The power developed by the engine at the speed of 1500 rpm. Power, we have derived this, mean torque into omega, and it is 2 pi n upon 60. If this is in rpm and this is in Newton meter, we'll get its power in watt or kilowatt. 10 पावर 3 से डिवाइड कर देंगे तो वाट में आ जाएगा, ये वाट में देगा, right? So friends, we need a mean torque. We have a mathematical formula to calculate mean torque from a varying torque, but we know it is always giving the constant part of t. So mean comes 450 Newton meter. Mean torque आपका इतना ही आएगा, right? RPM is given, so putting the value of mean torque and omega here, we'll get the answer. The kinetic energy available from a tractor engine flywheel rotating at 2000 revolution per minute is 100 kilojoule. If the radius of gyration is 0.27 meter, the weight of the flywheel is. So here kinetic energy is given in kilojoule. This is in joule. It is half I omega square I mk square omega from RPM. We have calculated here. This is the weight of the flywheel, mass of the flywheel. We have to calculate the weight of the flywheel, that is in Newton. Simple. A solid disc flywheel having 20 kg mass and 800 mm diameter. Solid disc. So its moment of inertia mr square upon the stored energy in the flywheel is, to calculate the value of k, half I omega square. We need I mr square by 2. M is given, R is given. This is moment of inertia. RPM is given. So from this RPM we can get the value of omega, angular velocity in radian per second. N is also angular velocity, but its unit is revolution per minute, RPM. We need here angular velocity in radian per second. Kinetic energy. The turning moment diagram of engine is represented by the following equation. T torque in Newton meter. Alpha angle moved by the crank from inner dead center, assuming the resisting torque to be constant, right? Resisting torque, that is the external torque जो है ना यहाँ भी constant है, और कितना फिट किया जाएगा, ये constant के वैल्यू के बराबर. अदरवाइज गवर्नर वो करेगा काम, फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करके बात वही करेगा. जितना एक्सटर्नल मीन टॉर्क रिक्वायर्ड है, इफ एक्सटर्नल टॉर्क is constant, the tractor is operating a field which is getting constant torque requirement. So mean torque of engine is always producing variable torque, so mean torque of engine must be equal to external requirement. नहीं है, गवर्नर वर्क करेगा, राइट? गवर्नर का काम क्या है? टू कंट्रोल speed fluctuation due to external loading.
एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से जो को कंट्रोल कर। एंड फ्लाईव्हील कंट्रोल्स इंट्रा साइकिल फ्लक्चुएशन, साइकिल के अंदर के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल कर, राइट, बिकॉज टॉर्क प्रोड्यूस्ड एंड रिक्वायर्ड आर ऑफ वेरिंग नेचर। रिक्वायरमेंट जो है ना आएगा फ्लाईव्हील से, और एक्सेस जो डेवलपमेंट है, प्रोडक्शन है, वो फ्लाईव्हील में स्टोर हो। तो फ्लाईव्हील will change its speed by certain amount in order to supply or receive corresponding, right, हम लोग जानते हैं। compute the power developed by engine at mean speed of 200 rpm, so power developed by engine mean torque into angular velocity in radian per second. So from this mean torque is this constant part, otherwise you can find mean by mathematical formula, right? So we are not going to find the mean because we know it is always a constant part of wiring torque. So mean is this. So power developed by engine at the mean speed. Mean torque and mean speed is also given, is given in RPM, 200 RPM, 2 pi n upon 6 radian per second is in Newton meter. We get its value in watt, finally in kilo. The change in torque at any given instant. At any time, we have to calculate change in torque. Dear students, here it is mentioned. Resisting torque to be constant. Resisting torque to be constant. We know from our fundamental concept, it is always equal to mean torque of it. Otherwise, governor will stabilize, happen disequality. राइट, तो हमें पता है कि मीन टॉर्क जो है ना, जो एक्सटर्नल लोड है, एक्सटर्नल लोड रेसिस्टिंग टॉर्क है, वो ये मीन टॉर्क के ही इक्वल होगी, राइट। तो द चेंज इन टॉर्क एट एनी गिवन इंस्टेंट वो क्या हो जाएगा, टी माइनस टी मीन। एक्सटर्नल लोड इतना लगा, इंजन इतना प्रोड्यूस कर रहा है, तो चेंज इन टॉर्क एट एनी इंस्टेंट, यही चेंज पूछ रहा है, ये हो गया। ये डेल्टा टी एक्सेस भी है। The angular acceleration of the flywheel at alpha is equal to pi by 4. Angular acceleration in the flywheel comes due to this excess torque. Excess torque की वजह से ही, क्योंकि T प्रोड्यूस हो रहा है एंड Tm कंज्यूम हो जा रहा है, रिमेनिंग T माइनस T मीन, एंड ड्यू टू दिस flywheel speed increases or decreases depending upon relative values of T and T mean, right? तो ये आपने देखा, हमें पूछा जा रहा है एंगुलर एक्सेलेरेशन एट अल्फा इक्वल टू पाई बाई 4, तो डेल्टा टी एक्सेस पाई बाई 4 निकाल लीजिए एट पाई बाई 4, टी माइनस टी मीन करके अल्फा की जगह पर ये पुट कीजिए, ये निकल जाएगा, इसे इक्वेट कर दीजिए आई अल्फा से। आई जो है ना given a moment of inertia is this, so we get the value of angular acceleration at alpha is equal to pi by 4. A very simple problem. कॉन्सेप्ट से हमारा चीजें हैंडल हो गया। The torque output of an engine is given by this, where alpha is the angle moved by crank from inner dead center. If the resisting torque is constant, find the horsepower developed by engine at 200 rpm and the excess energy for designing the flywheel at alpha is equal to pi by 4. एक तो पावर डेवलप पूछ रहा है, और एक्सेस एनर्जी फॉर द डिजाइनिंग ऑफ द, एक्सेस एनर्जी कहां पर, पाई बाय 4 पर एक्सेस एनर्जी उसके पास कितना है, राइट। तो फर्स्ट पार्ट इज वेरी सिंपल, हॉर्स पावर डेवलप बाय इंजन, तो आपका जो है ना टी मीन इंटू ओमेगा से कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। टी मीन इज द कांस्टेंट पार्ट ऑफ वायरिंग टॉर्क टी, RPM is given from this
we get the value of omega in kilowatt. Then आप इसको जो है ना वाट को ही 746 से डिवाइड कर देंगे, हॉर्स पावर में आ जाएगा। सेकेंड पार्ट के लिए एक्सेस एनर्जी एट अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4 और दिस वी नीड टर्निंग मोमेंट डायग्राम। मुझे टर्निंग मोमेंट डायग्राम क्लियर, यानी ये जो है ना इसका प्लॉट मुझे करना, ही इज वेरिंग विथ क्रैंक रोटेशन एंगल, हमें ये ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। तो दो इसका पीरियड आपका कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। हाउ टू फाइंड द पीरियड हमने देखा है, इसकी पीरियड पाई, इसकी पीरियड पाई, तो पूरे इंटायर की पीरियड पाई हो जाएगी। तो 0 टू पाई में हम देखते हैं 0 पर क्या वैल्यू होगी, तो 0 पर दिस माइनस कोई पर्टिकुलर वैल्यू हो गया, मीन आपका ये है। एंड पाई पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, एंड अगेन ये आपका 1 हो जाएगा, सो दिस माइनस वही वैल्यू आएगी पाई पर, राइट। क्लियर, यहां से स्टार्ट होगा कर्व और फिर जो है ना इस पॉइंट पर आएगा। मैक्सिमम कहां पर होगा, मिनिमम कहां पर होगा, और ये आपका मीन है, टी मीन, टी मीन जो कितना है 18,000, राइट। तो ये जो है ना फ्रेंड्स उठा, अब ये मीन जो है ना नीचे जाएगा कि ऊपर से ही यहाँ आएगा, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे कहाँ पर मीन हो रही है, और उसकी वैल्यू अगर इस वाले से नीचे होगी तो, राइट। ये मैंने रफ एस्टिमेट किया है कि आपको रिक्वायरमेंट कौन कौन चीज़ का, एक तो जो है ना इसका मैक्सिमम पता करना है कहाँ पर है, मिनिमम कहाँ पर है, और टी मीन को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर, टी मीन से टी को इक्वेट कर, दिस इज टी, टी मीन इज इक्वल टू टी, so we get point of intersection, clear। So in order to get the maximum and minima of t, we differentiate t with respect to alpha equated to 0, we get the value of alpha। दो वैल्यू आया, राइट, दो वैल्यू आया ना 59 पॉइंट समथिंग एंड 149.35, राइट। तो डियर फ्रेंड्स सेकेंड डेरिवेटिव फिर इसका निकालेंगे और देखेंगे कि अल्फा की वैल्यू सेकेंड डेरिवेटिव पर क्या आ रही है, इस वाले पर अल्फा, इस अल्फा पर सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है, इस पर क्या आ रही है। अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमा होगा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा होगा, क्लियर। वो क्लियर है आपका, अल्फा इस वाले पर नेगेटिव आएगा, यानी कि इस पे जो है ना मैक्सिमम है और इस पे जो है ना मिनिमम है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, यानी अल्फा की ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसको ले जाकर जो है ना टी में पुट कर दीजिए, तो इतना आया 18,000 से अधिक है, और मिनिमम जो है ना 8,422। तो अब इसी से पता चल जाएगा कि ये मिनिमम वाला जो है ना यहाँ जो मिला है हमारे 149 पर, और ये वाला पता चल गया कितना 59 पॉइंट जो भी समथिंग है, और ये 149 के आसपास है। तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पर जो कैलकुलेट, अगर ये वैल्यू इससे कम है तो नीचे आएगा, देख के पता चल जाएगा, डायग्राम नीचे आ रहा है। दिस इज टीमेल लाइन एंड द वैल्यू ऑफ टी व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ टी व्हेन अल्फा इज इक्वल टू पाई, इस पर जो है ना वैल्यू जो है ना इस वाले से लेस आ रही है, राइट। ये हमने जो है ना टर्निंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट, दिस इज वे टू ड्रॉ अ कर्व इन मैथमेटिक्स विच इज कर्व ट्रेसिंग। तो दिस इज वे टू ड्रॉ कर्व, हम डिफिकल्ट कर्व ट्रेसिंग भी लर्न करेंगे मैथमेटिक्स वाले, बट ये सिंपल सा था, राइट। तो आफ्टर गेटिंग टर्निंग मोमेंट डायग्राम, द प्लॉट ऑफ turning moment with crank rotation angle alpha, we have to calculate excess energy for the designing the flywheel at alpha is equal to pi by 4, excess energy। dear students, जो पार्ट मिन लाइन से एबव होगा वही एक्सेस एनर्जी में कंट्रीब्यूट, तो excess energy when alpha is equal to pi by 4, when crank is rotated by 45 degree, then excess energy is stored in the flywheel। यहां से स्टार्ट हो रही है, अल्फा इज 0, हियर द क्रैंक इज एट इनर डेड सेंटर और हेड डेड सेंटर। टॉर्क रिक्वायरमेंट
is greater because torque requirement is always equal to mean torque. So torque requirement is equal to mean, but engine is producing less torque, right? So energy is actually coming from flywheel. Speed of the flywheel decreases. For this angle of rotation of the crank, for this position of the crank, again torque produced by engine is less than mean torque or external torque requirement. So this deficiency is actually coming from flywheel, speed of the flywheel decrease, right? तो स्पीड जो है ना डिक्रीज होते जा रहा है, जब यहाँ पर आ जाएंगे, जहाँ पर हाँ, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट किया गया है? टी मीन एंड टी के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पर होगा? टी मीन और टी को इक्वेट कर दो, ये दोनों एंगल निकल गया, राइट? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ जो फ्लाईव्हील है इस जगह से स्टोर करना स्टार्ट किया बिकॉज टॉर्क डेवलप बाय इंजन इज ग्रेटर देन मीन टॉर्क, तो एनर्जी स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो आपका जो है ना, जब अल्फा इजकल टू पाई बाई 4 है यानी 45 डिग्री है, तो एक्सेस एनर्जी कितना स्टोर हुआ? तो दिस इज द एक्सेस एनर्जी stored in the flywheel when alpha is equal to pi by 4. So we integrate T minus T min. This is T. This total area is calculated T d alpha, and this area is calculated by subtracting this area T min into this angle, राइट? सो डिफरेंस फाइनली एक ही बार में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, टी माइनस टी मीन डी अल्फा फ्रॉम 14.352, राइट? गेट द आंसर। कॉन्सेप्ट से जो है ना चीजें सॉल्व होती है, रटाफिकेशन से नहीं। इंट्रांस से जी वी लर्न कॉन्सेप्ट एवरी टाइम फॉर एवरी सब्जेक्ट, राइट? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अदरवाइज जो है ना ये सब प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होते हैं। रटाफिकेशन से कब तक सॉल्व होगा? थोड़ा भी इसमें ट्विस्ट आएगा, आप जो है ना गड़बड़ कर देंगे। ताकि गड़बड़ ना हो उसके लिए जो है ना कॉन्सेप्ट है। द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्लाईव्हील एंड गवर्नर इज फ्लाईव्हील इज हेवियर देन गवर्नर। फ्लाईव्हील इज फिक्स्ड टू द क्रैंकशाफ्ट व्हाइल गवर्नर इज फ्लाईव्हील stores energy and governor controls engine speed. This. So in this way we have completed flywheel, right? अब आपको कोई प्रॉब्लम है देन जो है ना हम डिस्कस करें। हैव एनी प्रॉब्लम देन वी स्टार्ट डिस्कसिंग, राइट? यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम। और अपने जो भी फ्रेंड्स वगैरह है उनको जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन्हें ज़रूर बताइए बैच स्टार्ट हो गया है, राइट? अगर सही मायने में प्रिपरेशन करना है तो स्टार्ट से स्टार्ट करें। स्टार्ट हो गई है तो स्टार्ट से ज्वाइन, समय का इंतज़ार नहीं कर वेस्ट होने का। यस बोलिए, किसको? कहाँ? ये 13 नंबर है ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बोलिए। क्या इसमें हमको निकालना था क्या? टी इजकल टू, अच्छा ये इस वाले में बात कर रहे हैं। तब हमने जो है ना कहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है टी और कहाँ पर मिनिमम हो रहा है वो पॉइंट पता किया और कितना वैल्यू है वो पता किया। क्या प्रॉब्लम है? फिर जो है ना ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ है दोनों के बीच में, दोनों को इक्वेट करा गया है टी मिन एंड टी को, तो वो निकल के आ गया ये दो एंगल अलग से। और ये मैक्सिमम और मिनिमम से आया है ये दोनों पॉइंट, ये और ये। यहाँ पर देखिए फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पर मिनिमम। और ये दो पॉइंट आया है यहाँ पर, देखिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है टी और टी मिन के बीच में पॉइंट ऑफ, यानी कि इस एंगल पर टी मिन
एंड टी बोथ आर सेम। इस एंगल पर टी मीन ये है आपका, और टी की वैल्यू भी यही है, सेम है, इसलिए ये दोनों पॉइंट को निकालने के लिए टी को टी मीन से इक्वेट किया गया है। तो वी आर गेटिंग दिस 2 पॉइंट। क्लियर? हमें जो है ना चाहिए था ये, क्योंकि यही एक्सेस एनर्जी है एट अल्फा इजकल टू पाई/4, ये वाला चाहिए इस एरिया को। तो हम जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक टी माइनस टी मीन को इंटीग्रेट करेंगे अल्फा के रेस्ट फ्रॉम दिस एंगल टू दिस, not to get excess energy stored in the flywheel when crank is making angle alpha is equal to pi/4 from the inner dead center position of right। क्या प्रॉब्लम है इसमें? समझ में आया कि नहीं? और किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं हुआ होगा ना, क्लियरली जो है ना आप लोग को समझाया गया है। तो वी हैव कंप्लीटेड flywheel। द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लच डिजाइन। वो भी राइट। तो वी स्टॉप दिस।